everyone, myself Vikas, and today we are going to see a very interesting but a bit challenging topic, that is human reproduction. So let's kick off बच्चों. तो पहले हम ये देखिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है. इस पूरे चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आफ्टर दैट गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस जैसा कि वर्ड कह रहा है कि कुछ जनरेट हो रहा है, तो क्या जनरेट हो रहा है? गैमेट जनरेट हो रहा है, जिसमें हम लोग मेल और फीमेल दोनों में कैसे गैमेट्स का जनरेशन हो रहा है वो पढ़ेंगे. उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, a bit complicated topic, but we learn it, okay. After that the fertilization, then pregnancy, and last is parturition, okay. So let's start with male reproductive system. Now see, what does reproduction mean? Reproduction का simply मतलब इतना है कि to increase number of population, अपने जैसे same species को reproduce करना, okay. So you know, in earlier classes you have already learned about the reproduction. Now we are going to see some deep things. Let's start. Male reproductive. The male reproduction is divided into two parts. The first is primary sex organ, and here is the secondary sex organ. Secondary sex. So the primary sex organ means the primary thing. In this we include testes. What is this? Testes. But in the secondary sexual or sex organ is further divided into three parts. Okay. इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कौन सा डक्ट कौन सा ग्लैंड किसमें पार्ट होता है, तो इस चीज को समझेगा. तो मेल मेल जब हम लोग मेल एक्सेसरी डक्ट की बात करते हैं बच्चों, डक्ट की बात करते हैं, और इधर हम लोग बात करते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड की बात करते हैं, और लास्ट में हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ओके. तो जैसा कि वर्ड कह रहा है डक्ट, डक्ट है मतलब कि किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है. तो किस चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा? ऑब्वियसली बात है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा. इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस चीज को देखेंगे हम लोग. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस. रेटी टेस्टिस. सेकंड, इस ऑर्डर में लिख रहा है उसी ऑर्डर में हम लोग अभी ड्रॉ करके समझेंगे. Second is vasa differentia. The third is epididymis, very important. Epididymis. Epididymis. After that, the last but important, that is vas difference. So these are what? These are duct बच्चों. duct बोले तो जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ओके.
आफ्टर दैट द ग्लैंड्स। तो जब भी आप ग्लैंड्स पढ़ते हो तो ग्लैंड्स क्या करते हैं, किसी चीज का सिक्रीशन करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स है जो कि स्पर्म्स में क्या कर रहे हैं, कुछ सिक्रीट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का नाम है सेमिनल वेसल। सेमिनल वेसिकल। दूसरा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट gland, prostate gland, and the third is the bulbo urethral gland। क्या कोई दूसरा नाम भी है इसका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का? जी हाँ बच्चों, इसका दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड, COWPER, काउपर्स ग्लैंड। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं काउपर्स ग्लैंड, और दैट इज आल्सो कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एंड लास्ट, द एक्सटर्नल जेनिटिलिया कंटेन व्हाट? पेनिस। ओके, तो male reproduction, we divided male reproduction into two parts, the primary sex organ and the secondary sex organ. Here the primary sex organ include testes, and the secondary sex organ divided into the three parts, then the male accessory ducts, glands and external genitalia. So in the external genitalia only penis, but here the important things, that is reticestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. Then the glands contain seminal vessel, prostate gland, bulbourethral gland. Now let's move forward, और इसके आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसको? टेस्टिस। तो as next page पे करते हैं। तो testis is present, testis is the present where the scrotum, like if I draw, so here like this, testis is present in the scrotum. तो क्या जो टेस्टिस है वो पहले से स्क्रोटम में ही प्रेजेंट होता है या फिर कहीं और ओरिजिनेट होके स्क्रोटम के अंदर मूव करता है? उसके अंदर ओरिजिनेट कहीं और हो रहा है, मूव करके स्क्रोटम के अंदर आ रहा है। तो जी हाँ बच्चों, जो आपका टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल ओरिजिन होती है। कैसी ओरिजिन होती है? एब्डोमिनल ओरिजिन। तो यहाँ कहीं पे टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, कब होगा? ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। तो यहां से फिर जो आपका टेस्टिस है वो मूव करेगा स्क्रोटम में। तो मूव करेगा एक कैनाल के थ्रू, कैनाल के थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्विल कैनाल, इंग्विल कैनाल। ओके, इंग्विल कैनाल, व्हाट इज दिस? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? और ये जो आपका लास्ट वन है इसको क्या कह रहे हैं? स्क्रोटम। ओके, तो सपोज करो कि किसी एक केस में ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में मूव नहीं कर गया, नहीं कर पाया, एबनॉर्मेलिटी हो गई। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कभी? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। कभी कभी क्या होता है एबनॉर्मल कंडीशन में, ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में मूव नहीं कर पाता है, like it's failure of the descent of the testes. This condition is called cryptorchidism. क्या वर्ड बोला मैंने? cryptorchidism. So we can write here the movement of testes, the failure of movement of testes in scrotum into scrotum is called cryptorchidism. Okay, cryptorchidism.
दिस केस इज हैपन, इफ दिस केस इज हैपन, तो इसका क्योर क्या हो सकता है? सपोज करो कोई एक कंडीशन है जिसमें कि टेस्टिस मूव नहीं कर पाई और ये इसी जगह पे है, तो ये क्लिनिकल केस है और इसका क्योर जो होगा विद इन 18 मंथ्स, विद इन 18 मंथ्स बेटा सर्जरी करनी होगी। क्या करनी होगी? सर्जरी करनी होगी, वरना वो जो टेस्टिस है एब्डोमेन में वो कैंसरस हो सकता है और कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, तो 18 मंथ से के अंदर इसका सर्जरी, अब लाइक जो बेबी बॉर्न हुआ है तो बॉर्न होते ही सर्जरी तो नहीं कर सकते हैं, तो कुछ टाइम बाद 18 मंथ सर्जरी करके इसको वापस से स्क्रॉटम में डिसेंड कर देते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए कि टेस्टिस जो होती है वो स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? बिकॉज इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता है। That's why it's hangs below abdominal cavity and their temperature is 2 to 2.5 degree lower, 2 to 2.5 degree lower. NCERT highlight PYQ alert, lower, and it is a suitable condition for the spermatogenesis. तो क्या हम लोग सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं जितने भी अभी हमने सीखी है? तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा था उसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने सीखा था, पॉइंट्स और ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि टेस्टिस इज derived from meso, so three layers, you know, endoderm, ectoderm, mesoderm। तो टेस्टिस होता है वो किससे डिराइव होता है? वो मेसोडर्म से डिराइव होता है। दूसरा क्या सीखा है हमने? कहाँ ओरिजिनेट हो रहा था? एब्डोमेन में, तो इट्स एब्डोमिनल ओरिजिन। तो कैन बी राइट दिस? यस, टेस्टिस इज abdominal origin, abdominal origin। नाउ अब जैसे ही ओरिजिनेट हो गया, ठीक है, मेसोडर्म से डिराइव हुआ, देन एब्डोमिनल ओरिजिन। आफ्टर दैट इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन स्क्रॉटम में होती है। तो we can write here testis is located in scrotum, ठीक है। क्या होता है स्क्रॉटम में? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो temperature as compare to, as किसके कंपेयर में? कोर बॉडी टेम्परेचर में, as compared to कोर बॉडी टेम्परेचर। ओके ओके, डन। तो these are the 3 points that is we learn. Any other point we can add in this? तो मैंने आपको बताया हो, yes, we can add some another points like, as we know it is a abdominal origin in the fetal development। जब fetal development होता है तो abdominal origin होता है। तो बेटा ये कब, जो abdomen से scrotum में कब आएगा? Any idea? Okay, जब 7.5 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 7.5 मंथ जब प्रेगनेंसी होती है, then it begins to move, okay, it begins to move from abdominal cavity to scrotum। So we can write here
can write here during 7.5 months of fetal development, testes begin to move, testes begin to move कहाँ से? Abdomen to scrotum, begin to move from scrotum, sorry, abdomen to scrotum. बिल्कुल क्लियर. बट यार ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, 7.5 मंथ पे वो बिगिन होता है और टिल बर्थ के टाइम तक वो स्क्रॉटम में आ जाता है. कोई ऐसा केस होता है जिसमें नहीं आ पाता है, तो हमने सीखा है यहाँ पे क्या सीखा है हमने? फेलियर ऑफ मूवमेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोर काइटिज्म. इसका क्योर क्या है? इसका क्योर है सर्जरी से उसको फिर हम लोग स्क्रॉटम के अंदर कर देते हैं. तो now we know we learned that about the testes, and now we move on the next topic, that is accessory ducts. So to understand the accessory ducts, like if we see that the flow chart, like testes, now secondary sex organ में सबसे पहले हमने क्या लिखा है? मेल एक्सेसरी डक्ट. मेल एक्सेसरी डक्ट में इन सारे डक्ट्स को समझना है. एक बार आप इसको क्लियर समझ लेंगे तो फिर आपको ऑर्डर्स याद करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज पीवाईक्यू, ओके, जहां तक मैंने देखा है ये 3 से 4 बार पीवाईक्यू तो इधर रिसेंट के ईयर्स में आ चुका है, और आफ्टर दैट हम लोग आगे चलते जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. One more thing that I want to explain you, like this is the structure of scrotum, okay, and here a septum is present. What is this called? Septum. ये septum क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है टोटली एक टेस्टिस को दूसरे टेस्टिस से. तो जब आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे सपोज करिए कि ये टेस्टिस आपका प्रेजेंट है. इस टेस्टिस को एक मसल ने ऊपर से पकड़ रखा है, ठीक है, ऊपर से पकड़ रखा है. तो वो के रेगुलेशन के लिए, लाइक इन कोल्ड इट्स पुल अप टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, बट इन हीट in the summer season your testes is like properly in the scrotum. So this process is happen due to this muscle, and the name of this muscle is called cremaster muscle. क्या बोल रहे हैं इसको? cremaster muscle. So can we write this here? We can write this here, okay, cremaster muscle. क्या हो रहा है? cremaster muscle. After the cremaster muscle, one another muscle that is important, that is your dartus muscle. इस दोनों मसल को याद रखना बच्चों. तो dartus muscle होता है, वो लाइनिंग करता है किसकी? स्क्रोटम की. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये क्या है आपका? dartus muscle. dartus muscle. Okay, so septum, cremaster muscle, and the dartus muscle, and this is the scrotum. This is scrotum. So okay, all done. क्या इस
टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है इसको थोड़ा हम लोग और समझने के लिए जूम इन कर सकते हैं। इसका डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स सी, कर लेते हैं। आप किस कलर से किया जाए? ओके ओके ओके, वाइट से करें। What is this? This is your scrotum. Okay, scrotum contain testes. Scrotum contain testes. ये scrotum की लाइन है और ये testes की लाइन। This testes have a lobes in this structure, in their structure. Okay, lobe in their structure. So what they are called? They are called testicular lobules. तो मैंने कितने lobules ड्रॉ किए हैं इसमें? 1 2 3 4 5। तो क्या 5 lobule होते हैं? नहीं, एक टेस्टिस के अंदर, इस बात को याद रखोगे प्लीज, एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्स होते हैं। कितने? 250 लोब्स। ओके, so we can write here we can write each testis contain 250 lobes, lobules. Now इन lobules के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। These lobules contains seminiferous tubules. What they contain? Seminiferous tubules. So this coiled structure that I am drawing, it's seminiferous tubule. It's a highly coiled बच्चों। Like ये जो डायग्राम बना रहे हैं ये जितना पॉसिबल है हम कर रहे हैं, बट दे आर द हाईली कॉइल्ड। अभी जब फर्दर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसकी लेवलिंग, इसकी कॉइलिंग किस लेवल की। तो दे आर कॉल्ड seminiferous tubules. Okay, so these seminiferous tubules is a duct-like structure. They are connected to each other here, and lobules contains seminiferous tubule. तो एक lobule के अंदर कितने seminiferous tubule होते हैं बेटा? 1 से 3। NCERT हाईलाइट, ये NCERT का लिखा हुआ है और PYQ अलर्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ ईच टेस्टिस की बात की थी, नाउ हम लोग ईच लोब्यूल्स की बात करेंगे। ईच लोब्यूल कंटेन contain 1 to 3 seminiferous tubules। ओके, तो एक बार नीट में ही क्वेश्चन आया था बच्चों कि वन टेस्टिस कंटेन हाउ मेनी seminiferous tubules। so you know how to calculate it, 250 into 3 and you will get the answer. Okay, now here, तो इस डायग्राम को बनाने का पर्पस क्या है, क्या समझना चाहते हैं हम इस डायग्राम से? फिलहाल इस डायग्राम को बनाने का पर्पस ये है कि ये जो हमने डक्ट्स लिखे हैं, ये 4 डक्ट्स जो मैंने लिखे हैं, इस डक्ट को आपको एक्सप्लेन किया जा सके। देखिए, these seminiferous tubules opens into a structure that is called your testes। क्या बोल रहे हैं? तो ये वाला पार्ट आपका seminiferous tubule है, बट यहाँ जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? testes। so I will label it when we complete it. Okay, now these testes is open here, and
again they are connected like this and this. So here now see seminiferous tubule, seminiferous tubules. After that, this is called your retetestes. Now, this retetestes makes a structure that is called, this is structure that connects this part to the testes. This is called your vasa differentia. Vasa differentia. After this vasa differentia, a new structure that formed, that is called your epididymis. Epididymis. This epididymis is more important because it have function, number of function. We are see one by one. Epididymis, and after this epididymis, a coiled structure is formed that goes into the penis, and this structure is called your vas differens. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? vas differens. So as I told you कि epididymis बहुत important है. तो epididymis का फंक्शन क्या हो सकता है? क्या ऐसा है इसके अंदर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है? Actually, this epididymis is responsible for the functional maturation of sperm. Functional maturation of sperms के लिए कौन responsible है? Epididymis. अगर suppose करो कि अगर we collect the sperm directly from the testes, like हमको इतना टाइम नहीं दे रहे हैं कि वो आगे मूव करे इन डक्ट्स के अंदर, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगी? What your opinion on this? क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगी अगर हम स्पर्म को डायरेक्टली टेस्टिस से ले लें? इसका आंसर है बेटा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी उनका मैच्योरेशन, फंक्शनल मैच्योरेशन हुआ ही नहीं है, तो दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द ओवम. जब आप यहाँ से लेके इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यू विल सी द स्पर्म इज coiling like round because the tail part of the sperm is not so developed, well developed. They did not achieve their motility. Okay, listen carefully what I am saying. They did not achieve their motility. So where they achieve their motility? They achieve their motility here, in epididymis. Let's see what I mean when I say epididymis. So as the name suggests, the word EP बोले तो जब भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में वर्ड्स को डिवाइड करके तोड़ के उनका मीनिंग समझने की कोशिश करो. EP का मतलब होता है above. ओके, above. एंड डिडाइमिस का मतलब क्या होता है? डिडाइमिस का मतलब क्या होता है? टेस्टिस. तो इसके अबब किसके? टेस्टिस के अबब. तो देखो टेस्टिस के अबब है, तो सिंपल. अब फंक्शन पे आते हैं. क्या फंक्शन करते हैं? द फंक्शन ऑफ epididymis is they are responsible for, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों.
So here we are going to see what is the function of epididymis. So first we can write here. Epididymis, EP. You know the meaning. I explained. Epididymis. Epididymis का मतलब above testes. एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं above testes. Okay. दूसरा, they are responsible for they are responsible for what? Functional maturation. Right here. Functional maturation. This epididymis is 6 meter long. 6 meter long. PYQ alert. NCRT line. Please listen carefully. The length of epididymis is the 6 meters. So now you can imagine this is how much coiled this structure. This is a highly coiled structure because it also have another work that they can store the sperm. They can store STOR, store sperms up to 1 month. Up to 1 month. Okay. But suppose after 1 month, sperms are still present here. Like sexual intercourse अगर नहीं होता है और वो sperm जो है बेटा वो ejaculate नहीं हो पा रहे, तो उस केस में इन sperms का क्या होगा? आप बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं क्या होगा? बेटा इन sperms का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा इन्हीं epididymis. क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा epididymis. Okay. So how many functions we have? So we have 3 points, important 3 points. They are responsible for the functional maturation. The length of the epididymis is the 6 meter long, and they can store the sperm for up to 1 month. Okay. Now except epididymis, any other structure can store the sperm? Yes. Vas deferens have also the tendency to store the sperm. Okay. Vas deferens, they can store store the sperm. तो एक बार नीट का क्वेश्चन ये था बच्चों, 4 ऑप्शन दिए थे पहले, उसमें से बोला गया था above which of the above options are is and are can store the sperm, और नीचे थे 2 3 1 4 1 और 2 2 और 4 ऐसे। तो याद रखना vas deferens और epididymis they both can store the sperm. PYQ alert. Okay. So I hope now the difference is clear. First, the seminiferous tubules release their secretion. What? These sperms in reticestes. The reticestes works to conduct. क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है किसके थ्रू? ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये क्या है? दिस इज वासा इफ्रेंशिया. Okay. Vasa differentia. After this vasa differentia, an important structure is present जहाँ पे sperm का functional maturation हो रहा है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? Epididymis. Okay, epididymis. And after this epididymis, a structure that takes the sperm from out of the scrotum into abdominal cavity, that passage is called vas. Okay, come on.
करते हैं एक बार जल्दी से, क्या क्या पढ़ा है हमने आज? मेल रिप्रोडक्शन टू पार्ट्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मेल एक्सेसरी डक्ट, रेडिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ग्लैंड्स मतलब जो सिक्रीट कर रहे हैं, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ टेस्टिस। क्या टेस्टिस जो है वो टेस्टिस स्क्रॉटम में ही ओरिजिनेट हो गया? नहीं, टेस्टिस आर द एब्डोमिनल ओरिजिन एंड दे during the 7.5 month of the fetal development, testes began to move, यहाँ पे move miss हो गया बच्चों, begin to move from abdomen to the scrotum. ओके, क्या कभी ऐसा होता है कि ये मूव नहीं कर पाते हैं, माइग्रेट नहीं कर पाते हैं? हाँ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड cryptorchidism. Again, see here, testes are derived from the mesoderm. Testes is the abdominal origin. They are located in the scrotum because the temperature of the scrotum is the lower as compared to our core body temperature. कितना लो होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस. NCRT line, TYQ alert both. Next, the structure of the testes is first we see the structure of the scrotum. This is the scrotal bag. Here the two important muscles. That first is called the cremaster muscle that holds the testes and regulates from pulling upward and the downward according to the temperature, and the last that lines the scrotal wall, that is called the dartus muscle. Here the septum is present that divides both the testes. After that we see the large structure of the testes. Here a very highly coiled structure, that is seminal serous tubule are the present. This is responsible for the spermatogenesis, जहाँ पे sperms generate हो रहे हैं. These sperms comes in a structure that is called retrotestis. After that it's move in the vasa efferentia. It works like to like the connection. किसको connect कर रहा है? Epididymis और retrotestis को connect कर रहा है. After that sperms comes in epididymis, then vas difference, and their function I already explained. Okay, so that's all for today's class, and in the next class we will learn about the glands and their secretion. Okay, thank you. अच्छे से पढ़ाई करो. Okay, all the best.